thought was that a dream come to reach the runner-up position in MasterChef. Wow. So, I can see the book here. It's called What's on the Menu, and this is your debut book. So, what inspired you to write this book? Basically from the women of my household, that's my mom, grandma, grandmother-in-law, and so I've learned one thing from them, that is food brings people together. And I thought what a better way than to write a book and dedicate the recipes from this book and this book to all the women in my life. So this was a big inspiration for me. And after MasterChef, among the loads of dreams I had, I'm a big dreamer. So writing a cookbook was one of them, and finally it's a reality today. So I'm really happy. So tell me one thing, I can barely start a recipe. I can't cook at all. And I read somewhere that with this book, even people who don't know how to cook can somehow manage to share a good recipe. Is that true? Yeah, of course it's true, because I learned a lot of my cooking through cookbooks while I was passionate about cooking. So cookbooks were very handy to me. But when I did my own, I was pretty nervous, and I kept all those things in mind which I thought a cookbook should have. Yeah, I did not want it to be a specific cuisine, so it's a multi-cuisine. It's got traditional recipes, it's got family recipes, it's got a few of my signature dishes, as well as a few international recipes also. So a few things I kept in mind is one, that every recipe should have a picture, and it should cater to all the levels, the amateur cooks, those who are passionate about cooking, and good like upcoming chefs also. So we kept all these things in mind and did the book, and I'm sure, of course, they are very simple recipes. Any newbie also can whip up something very interesting. Wow, I can't wait to take the book home and start a good recipe. So we have Chef Michael today here with us. Chef, do you want to come and say a few words about Shazia? Because you've seen her throughout MasterChef India Season 2. What do you want me to say? Anything that you want to say about her. It was fun with Shazia had on the sense of MasterChef. We had fun. And a lot of learning from learning. one of my mentors on the show. She taught me a lot, we taught her a lot, and it was good food all the way. It was good fun. Thank you so much. So how was it when you met her for the first time on the set? I think the first time wasn't on the set, but on the staircase going up to the auditions in Delhi. And I told her, what have you got? I want to taste it before it goes inside. So she said, no, we have to taste it first. I said, no, I have to taste it first. And I didn't know that time he was one of the judges also. So we met actually on the staircase at the auditions venue in Delhi. Very interesting. And I think we kind of clicked that time itself, and he's been a fabulous friend from then on. Always motivating, whenever I wanted help, he's just a call away, and it's like fantastic to have him around. So Chef, any moment, because you spent a lot of time together, and you was something in MasterChef memory that you'd like to share with us? I think always at the time of creating, she created differently from what I told her to do or asked her to do. And then she said, bang! Yeah, so whenever we had to, MasterChef was all about plating also. So we are amateur cooks, so finally we went thought how to plate dishes together, and Chef Michael would guide us how to do it. And and I would end up plating it differently, and he would be staring at got the hang of it at the end. Yeah, finally, he got the hang of the contest. Thank you so much. No, I think it's fine. It's okay. Yeah. And that's about it. We're just going to toss everything together. A few cherry tomatoes. Not this one either. Anyway, chalo. Yeah. And a little bit of the dressing. Very gently. Let's just toss up everything together. It's a lovely, beautiful colorful salad. Plate it. Yeah.
Let me just put a little more dressing on top. Just give me a minute, let me just. And we can do one or two photos for you. Yeah. Okay. Yes, ma'am. Yeah. Yeah. I love this.
साजिद, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन और समेली, ये जो आपकी बुक आई है। थैंक यू। ढेर सारे डिश भी दिखाई दे और इतनी ढेरों सारे हमने देखा यहाँ पे डिश भी दिखाई और हमने देखा कि यहाँ पर ढेरों सारे डिश भी दिखा और एक बहुत ही ब्यूटीफुल पत्र लेखा भी यहाँ पर जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आज के दिन आपके लिए कितना खास है? आज का दिन तो बहुत ही खास है क्योंकि हम व्हाट्स ऑन द मेन्यू बॉम्बे में लॉन्च कर रहे हैं। तो मुंबई तो है ही सिटी ऑफ ड्रीम्स एंड इट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट ड्रीम्स टू हैव अ बुक एंड आई एम हियर इन मुंबई एंड आई हैव अ वेरी प्रिटी एक्ट्रेस विद मी टू लॉन्च द बुक, सो इट्स एड्स मोर, क्या बोलते हैं, मेरी बुक लॉन्च और भी ब्यूटीफुल हो गई है। आप यहाँ पे प्रेजेंट है और ये यहाँ पे ढेरों सारे डिश हैं, तो आप साजिया जी बताएंगे कि ये क्या है, तो आप पहले तो आप क्या फील करती हैं आप यहाँ पर आज आप? जी, मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि शाज़िया ऑलरेडी 2012 मास्टर शेफ़ की विनर रह चुकी है और मेरे जैसे लड़कियों को जिनको खाना बनाना नहीं आता है, एक बुक बहुत हेल्प करता है आगे जाके। एंड आई हैव हर्ड वेरी नाइस थिंग्स अबाउट शाज़ियाज़ कुकिंग, सो आई होप टुडे शी विल गिव अ टेस्ट ऑफ सम ऑफ अमेजिंग फूड। शाजिद, इन्हें खाना बनाने नहीं आ रहा, तो अब आई थिंक ढेरों सारे टिप्स आप देने वाली हैं? जी बिल्कुल, मेरी बुक ही बहुत बड़ी एक टिप की भंडार है क्योंकि इसमें बहुत सारे इजी रेसिपीज़ हैं जो हमने खासकर माइंड में रख के बनाया है। जो एमेच्योर कुक्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, यूजुअली कुक बुक्स में क्या होता है, काफ़ी एलैबरेट रेसिपीज़ होती हैं, बट मैंने खास करके ये ध्यान में रखते हुए बनाया क्योंकि जब मैंने कुकिंग की शुरुआत की थी तो बुक्स मुझे बहुत हेल्प किया है। तो आई हैव केप्ट इट दैट इन माइंड एंड any newbie can open a book and whip up definitely something delicious from what's on the menu. ये कुछ डिश भी आपने यहाँ पे बनाया है, तो कुछ अगर बताना चाहिए पत्र लेखा जी को? Yeah, this is a summer salad, very nice with fig and asparagus. इसका सारा हमने जो dressing बनाया है, we made it with sweet figs, which is also very healthy and perfect for summer. Perfect for me. I literally and it was whipped up in not less than 3 minutes. So wow, yeah. That's very handy, you know. मुझे कुकिंग के बारे में क्या बहुत बोरिंग लगता है कि इतना टाइम लगता है और आँख के सामने आप बनाते ही जा रहे हो। So I think this is a fabulous thing. You must share the recipe. Yes, it is there in the book. Oh, superb. So आप कुछ टेस्ट करने वाली हैं? अगर शाज़िया जी कहेंगी मुझे। yeah, sure, you can. I think you should try it with a fork with a piece of this, a little bit of this. Also, I'm a big foodie. I love food. Can we have Neha, a fork? We'll just give her a bite. I don't know if it's lived up, but it's neat. It's made just. It's a little sweet, a little spicy, and tangy. Yes, आप पत्र लेखा जी बताने वाली कि ये कितना टेस्टी है और कितना। आपको देख के क्या लगता है, आप मुझे बताओ। मुझे तो बहुत ही टेस्टी, मुझे बेहद टेस्टी लग रहा है। It's got figs. It's got. Oh my God, it's lovely. Simple है and बहुत ही nutritious भी है. So अगर So ये good. that's asparagus. So I'm a fan of yeah. So good. Thank you. ये अगर पत्र लेखा जी को अगर बनाना हुआ या सिखाना हो तो आप कैसे उन्हें बताएंगे कि बहुत आई थिंक बहुत इजी है? बहुत इजी। आपने देखा कि हमने इसको बिल्कुल 3 मिनट में किया है। तो इट्स जस्ट अ ड्रेसिंग एंड आप जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनको यूज़ करके एक ड्रेसिंग अच्छी सी बना के एक समर सैलेड बना सकते हैं। तो चलिए हम आशा करेंगे कि ये आपकी बुक है और ये सारी दुनिया में बहुत ही फेमस है। थैंक यू सो मच। पत्र लेखा जी, एक आपसे सवाल करना चाहिए कि हम देख रहे हैं इन दिनों जो बायोपिक का बहुत ही प्रचलन जी। है। हम देख रहे हैं धोनी के ऊपर बायोपिक आ रही जी। है, अजहर के ऊपर, जी। सचिन के ऊपर भी बायोपिक जी। आ रही है, तो आप कितना बिलीव करती हैं बायोपिक पर? मैं कितना बिलीव करती हूँ बायोपिक एज एन एक्टर, मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी भी तैयार हुई हूँ एक बायोपिक करने के लिए, क्योंकि एक एक्टर को बहुत ही उम्दा होना पड़ता है, एक बिकॉज इट्स सो क्लोज टू रियलिटी, और आपको उतना ही अच्छा एक्टर भी होना होता है। तो आई थिंक जो जैसे इमरान इमी कर रहे हैं, सुशांत सिंह कर रहे हैं, और हमने कंगना भी कुछ करी है आई थिंक हंसल सर के साथ। सो आई थिंक दीज आर फिनोमिनल एक्टर्स एंड दे विल रॉक दैट फिल्म। और लव गेम तो हमने आपकी देखी जो कि आपकी एक्टिंग को बहुत आप आगे क्या कुछ प्रोजेक्ट होगा या? जी, मैं कुछ डायरेक्टर्स के साथ बात कर रही हूँ, अनीस सर भी उसमें से एक है, तो देखती हूँ आगे जाके क्या मैं साइन करती हूँ, बट समथिंग इज कमिंग अप फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।
big and Fish and asparagus. asparagus salad. Okay, now you're gonna try it as well, I right? did. I had so much. Oh, you didn't have this one. This one was Oh free. yeah, that's I made my meal. Yeah. So let's see. So, How good does she really Abhishek, try this. That's the fig. That's a fish. Spicy fig. Yeah. It's something for the first time I'm having. Yeah. Sadia, should I give you Yeah, of that? course. Feed her, feed her. My mouth Now have already it with watering. the Okay. lettuce and all that. So with that it'll be yummy. She's actually eating like a mukkad right now. I am a cooker. Oh, you are? Oh God. Okay, we'll get to that after you. See, you said you're not a salad fan, Abhishek, but you are going to eat this. No! Don't do this to So me. good. Don't do this. Okay, I'm like being I Okay. don't Sadia, can I chip in with you? Yes, of course you can. So you can have the whole thing. He's like, no. Yeah. I'm here. अरे कुठे ते Abhishek, what are you doing? I'm just shooting you. Why? अरे इथं म्हणून प्लीज कम लेट Yeah, as much as I can. अरे बॅग येते इकडे पार्टी काय Yes, please. बस हो गया यार, मैं भी आपसे थोड़ा बस साथ ओके मैम यो Ready? मेरे ना इसको पड़ा 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 प्लीज क्लोजर Everybody, please. मैम यो Okay, yes, sir. Okay, everybody, please. Yes, please. Ma'am, this side, slightly. Yeah. Yeah. सेंटर मैम So your coat is here. Which you were traveling. सोलो 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 Yes, ma'am. Dadaji, Yeah. Ma'am, you? Both of you, yeah. मैम यो Yeah, thank you. मैम यो Left side, yeah. Yeah. मैम यो Yes. मैम यो